Now let's start our next chapter, that is rights in the Indian Constitution. Student, in our first chapter we have studied about the Constitution. We have studied about everything about the Constitution. What was the Constitution? Constitution was a written document. It was a written book. It is a book of rules, and we have the world's longest written constitution. Our constitution is one of the very unique elements in which all the things are written for the benefit of the citizen. So similarly, now we will study in this chapter about all the rights our constitution gives us in detail. Okay. Student, today let's start with a brief introduction. I will not teach you more today. Reason being, let us start slow with this chapter. This chapter is very important, and even this chapter will be in continuation in class 12th as well. So you have to study regarding this chapter very deeply. So try to understand it. We will go really slow so that all your doubts, all the things you want to clear it, it will be clear hand in hand. Okay. So in this chapter we will be studying about a constitution is not only about the composition of the various organs of government and the relation among them. As we studied in the last chapter, the Constitution is a document that sets limit on the power of the government and ensures a democratic system in which all the persons enjoy certain right. So student, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे अलग अलग ऑर्गन्स के साथ एक कॉम्पोजिशन क्रिएट किया है गवर्नमेंट का, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो कि हमारे लिए काम करती है, एक सिटीजन के लिए काम करती है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए काम करती है. कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट्स तय हुई, पावर्स तय हुए कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को कितनी पावर्स मिलें ताकि वो जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो हैम्पर ना हो और लोग अपने अपने अधिकार एंजॉय कर सकें. जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वी ऑल आर हैविंग सो मेनी ऑफ द राइट्स, right to live, right to express, right to constitutional remedies. We have 6 fundamental rights. We have duties as well. So उन rights को proper तरीके से किस तरह से लोग follow करें, उन organs को कैसे वो work करें, government हमारे लिए क्या beneficial steps ले, वो सब कुछ इस chapter में हम पढ़ेंगे. So in this chapter we shall study the fundamental rights contained in the Indian Constitution. Part 3 of the Constitution of India lists the fundamental rights and also mentions the limit on these rights. So हम इसके पार्ट 6 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर लिस्टेड है, लिखा हुआ है हमारे फंडामेंटल राइट सारे. तो उसके अंदर लिमिट्स भी तय है कि हर राइट के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या आपकी लिमिटेशंस है. In past six in past 6 decades, the scope of rights has changed in some respect, expanded. After studying this chapter, you would know what are the various fundamental rights listed in the Constitution of India. इस चैप्टर के बाद हमें ये समझ में आएगा कि हमारे पास ऐसे कौन से अधिकार हैं, ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं. हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, ये राइट्स, ये अधिकार कितने प्रोटेक्टेड है, मतलब हमें कितनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसको कितना प्रोटेक्टेड बनाया है ताकि लोग बाग उसका कोई नाजायज फायदा भी ना उठाएं. What role the judiciary has played in protecting the interpreting these rights. जुडिशरी का क्या रोल है इसमें, जुडिशरी कैसे सोचती है, जुडिशरी इन लॉ को कैसे आगे इम्प्लीमेंट करती है. हमने पढ़ा था ना, उसके 3 ऑर्गन थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी. लेजिस्लेचर क्या कर रहा था, लॉ बना रहा था. एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था लॉ को. और जुडिशरी क्या कर रहा था, जुडिशरी लोगों तक उन लॉ को पहुंचा रहा था, लोगों को न्याय दिला रहा था, उनके अकॉर्डिंगली काम कर रहा था. What is the difference between the fundamental rights and the directive principle of state policy?
हम ये भी पढ़ेंगे कि ऐसे हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, यह हमने हमारे चैप्टर 1 में भी डिटेल में पढ़ा है। हम उसके बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे चैप्टर को। सो स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट class. So till that time, please go through with the first chapter thoroughly so that it will be easy for you to understand your this chapter.